તો એ એની જ બુરાઈ કરતા હોય છે. એટલે અ ફ્રેન્ડ ઇન નીડ ઇઝ અ ફ્રેન્ડ ઇનડીડ. નેક્સ્ટ, અ ફ્રેન્ડ ઇન નીડ ઇઝ અ ફ્રેન્ડ ઇનડીડ પછીનો આપણો જે ટોપિક છે એ છે પ્રેક્ટિસ મેક્સ પરફેક્ટ. પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. પ્રેક્ટિસનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું હોય પરફેક્શન માટે એ આપણને ઘણો ખરો ખ્યાલ છે કે સખત મહેનત વગર, સખત પરિશ્રમ વગર કાંઈ મળી શકતું નથી. તો પહેલાં આપણે એક વિડીયો જોઈએ પ્રેક્ટિસના ઇમ્પોર્ટન્સ માટે અને પછી આપણે આ ટોપિક ઉપર આવશું. ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. एग्जाम्पल बड़ा छोटा है, मर्म बड़ा है. एग्जाम्पल यद्यपि छोटा है, मर्म बहुत बड़ा है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007. तेंदुलकर जब लौट के पेविलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले. और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर की. उसने बोल्ड मारा सचिन तेंदुलकर. मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर. बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा. ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा. और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक ब्रेड हॉग और तेंदुलकर इसके बाद खेले, कम से कम 30-35 एनकाउंटर हुए उनके. टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, इवन IPL के अंदर ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर. ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका. मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर सैंडविच डोसा नहीं खा रहा होगा, एक चीज कर रहा होगा. क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद. लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा. उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको. कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए. आज आप लिख दो कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा और उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को जला दो. आप लिख दो और फिर उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को मैं कहता हूं जला डालो. प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है. प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए. मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की. पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए. MF हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो. पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे तो एक लेडी उनसे टकराई. उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया. भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया. सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में. 30 सेकंड में पलट के दिया. उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीस. दिस पेंटिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीस. लेडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स वर्थ रुपीस 50 लाख. तो लेडी गई, 3-4 जगह से उसका रेट पता किया. उसने बोला, इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम. उसने बोला, यस इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग. कितने का खरीदोगे? मैडम कम से कम 50 लाख रुपए हम आपके दे सकते हैं इसकी. लेडी वाज शॉक्ड, माय डियर, शी वाज शॉक्ड. 50 लाख रुपए की पेंटिंग 30 सेकंड में. उसने पता किया पाब्लो पिकासो कहां रहते हैं. ढूंढी ढूंढी ढूंढी, एग्जीबिशन कहीं थी पाब्लो पिकासो की. ढूंढते ढूंढते पाब्लो पिकासो के पास पहुंची. सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की. 50 लाख की है सर. उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है. उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती. पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए. 30 साल लग गए. It took me 30 long years to draw a painting worth rupees 50 lakh rupees in just 30 seconds.
ये कुछ भी कर सकता है सर। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर कोई ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो? आर यू मैड? इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला, मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है। आज मैं स्टेज पर हूं, करीब करीब मुझे 15 बरस हो गए बोलते हुए। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया, मेरे पैर लड़खड़ाते थे सर, शिवरिंग होता था मुझको। वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में पहली बार एक अंग्रेज को सुना था। आज से मैंने करीब करीब 18 साल पहले। एक कंपनी थी इंडिया से बाहर की, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, नाम नहीं ले सकता। तो वहां बैठा था पीछे, 660 लोगों की सीटिंग थी। मुझे मेरी मासी जी का एक बेटा है, वो मुझको लेके गया उस कंपनी के सेमिनार के अंदर। कहीं पीछे रूम में मुझे जगह मिली, 30 रुपए का टिकट था उसका, मुझे आज भी याद है, 20 बरस पहले, 18 बरस पहले। और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था। जैसे ही वो अंग्रेज आया, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, उसकी सीटियां उनके हाथ में थी, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा, तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? तू तो स्टेज पे जाएगा, तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और આપણે જોયું પ્રેક્ટિસનું ઇમ્પોર્ટન્સ. પ્રેક્ટિસથી દરેક વસ્તુ એચીવ થઈ શકે છે. તો આ તો પ્રેક્ટિસનું ઇમ્પોર્ટન્સ. પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. You cannot become a world class musician unless you take up your instrument and play on it daily for hours together. એક વર્લ્ડ ક્લાસ મ્યુઝિશિયન ન બની શકાય જો તમે રોજ કલાકો ને કલાકો સુધી એની પ્રેક્ટિસ ન કરો તો. You cannot become Tendulkar merely through inborn skill. નેચરલ ટેલેન્ટથી ખાલી નેચરલ ટેલેન્ટથી ટેન્ડુલકર પણ ન બની શકાય. એના માટે ખૂબ જ પ્રેક્ટિસની જરૂર પડે. Tendulkar was practicing through the last day of his career. You have to go to the nets every day for hours to practice. You need a coach to guide you and tell you where you go wrong. પ્રેક્ટિસની સાથે એક કોચની પણ જરૂર હોય છે, જે જ્યાં તમે તમારી દિશા ભટકી જાઓ ત્યારે તમને કોચ હોય એ પાછો એ દિશા પર લઈ આવે, એવા એક ગાઈડની જરૂર હોય. મેરિટ હોલ્ડર્સ in board examination do not achieve their marks by pure inspiration. ખાલી ઇન્સ્પિરેશન મોટિવેશનથી સેન્ટર કે બોર્ડમાં નંબર નથી આવી જતો. એના માટે ખૂબ જ પ્રેક્ટિસની જરૂર પડે. They have studied throughout the year and revised and made themselves perfect in whatever they set out to study. એટલું બધું પરફેક્શન સ્ટડીઝથી, કોન્સ્ટન્ટ રિવિઝનથી આવી જાય કે એક્ઝામ્સની અંદર પછી કાંઈ પણ પૂછવામાં આવે તો બેસ્ટ જ એનું પરફોર્મન્સ આવે. It is only regular practice that makes one perfect. If you don't practice your work regularly, you will at the most be an average in your performance. તમારામાં કોઈ એક સ્કિલ આવી ગઈ, કોઈ એક ટેલેન્ટ, કોઈ એક આવડત આવી ગઈ, અત્યારે પણ હશે, પણ તમે જો એની રોજ પ્રેક્ટિસ નથી કરતા તો તમારું પરફોર્મન્સ ઇન ફ્યુચર એવરેજ રહેશે. બટ ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ યોર ટેલેન્ટ એવરી ડે રેગ્યુલરલી, then you can become perfect. You will not win prizes or medal or award if you don't work it regularly. The most difficult task can be performed by anyone if they take the trouble to practice daily and regularly. In fact, you can achieve almost anything with practice. Practice is important and practice makes man perfect. If you don't practice your work regularly, you will at the most be average in your performance, not win prizes or medals or award. Third point. A hand makes a handshake. A handshake extends warmth and friendship and reaches out to the world. India is a land of diverse people, cultures, religions, language and geography. Yet as long as we are united,
we are strong and no one can do us harm. The moment we show any sign of division, we will be vulnerable and enemies will try to take advantages of the situation. A team in which the individual members play for their own good cannot win a match. As long as it plays for the good of the team, it can win. Anything that we do should do for the general good, not for the individual, though only we can achieve victory. પ્રેક્ટિસની અંદર એક વસ્તુ હોય છે કે જ્યારે તમે ટીમ સ્પિરિટથી રમો છો ત્યારે હંમેશા જીત તમારી થાય છે. જીત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રેક્ટિસથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલની નથી હોતી, તો પ્રેક્ટિસ કરવાથી ટીમ સ્પિરિટ રાખવાથી આખી ટીમની જીત થાય છે. થર્ડ pro is God help those who help themselves. There are students who don't study all through the year and then one day before the examination they go to the temple, make offering, perform puja and think that God will answer their prayers and give them good result in the examination. આવું ઘણી વાર આપણી સાથે થતું હોય. એક્ઝામના આગલા દિવસે આપણે ભગવાનના મંદિરમાં જઈને દર્શન કરતા હોય, પૂજા કરતા હોય અથવા આગલા દિવસે વાંચતા હોય અને આપણું બેસ્ટ રિઝલ્ટ લાવવા માટે વિચારતા હોય. Such student will find much to their dismay that God does not help shirkers. He only helps those who help themselves. તમે તમારી પોતાની મદદ કરો તો ઓટોમેટિકલી God will help you. તમે તમારી પોતાની મદદ ઇન ધ 6 મહિનાના સેમિસ્ટરની અંદર 4 મહિના આપણે કાંઈ વાંચતા નથી, તો એ 4 મહિના આપણે આપણી કોઈ મદદ નથી કરી, તો ગોડ આપણી મદદ ન કરે. પણ 4 મહિના આપણે આપણી મદદ કરેલી છે, તો લાસ્ટ મોમેન્ટે ગોડ વિલ ઓલ્સો હેલ્પ યુ અને એ વર્ક સક્સેસ જશે. તો એ પ્રોવર્બનો મિનિંગ થાય છે કે ગોડ હેલ્પ ધોઝ હુ હેલ્પ ધેમસેલ્ફ. તમારે પોતાની મદદ કરવાની છે, પછી એની મેળે વસ્તુ મળી આવશે. There is the story of a scientist who worked for years in order to find out the cause of malaria. He had performed hundreds of experiments and almost given up hope. એક સ્ટોરી છે એક સાયન્ટિસ્ટની, જે વર્ષો સુધી મલેરિયાની દવા ગોતવાની શોધવાની ટ્રાય કરી રહ્યા હતા. હંડ્રેડ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ એને કર્યા લેબોરેટરીમાં અને લગભગ એને આશા છોડી દીધી કે હવે આ બીમારીનો શોધ નહીં થાય. મલેરિયા એ ટાઈમમાં બહુ ગંભીર જાનલેવા બીમારી ગણાતી હતી. ધેન હી પ્રેડ એન્ડ ફેલ અસ્લીપ. પછી જ્યારે એની આશા તૂટવા માંડી ત્યારે એને પ્રાર્થના કરી એન્ડ હી ફેલ અસ્લીપ. એ સૂઈ ગયા. ધ નેક્સ્ટ મોર્નિંગ હી વોક અપ વિથ અ ન્યૂ આઈડિયા ઇન હિઝ હેન્ડ. He tried it out and yes, behold, he had found the cure for malaria. Thus we can see that God helped only those who help themselves. Next morning જે ગઈ રાતે એને પ્રાર્થના કરી હતી અને પછી એ સૂઈ ગયા હતા, એની બીજી જ સવારે એને એક આઈડિયા આવ્યો, લેબોરેટરીમાં ટ્રાય કર્યો અને એ જ મલેરિયાનો શોધ બન્યો, મલેરિયાની દવા બની. This is because God has given us all talent, attributes, એટલે characteristic, ગુણો, and thinking power to achieve what we want. After being given all this, why should we again rely on God to achieve success? We should only rely on the gifts that God has given us to make progress in life, rather than on God to do it for us. ભગવાન આપણને આટલી બધી વસ્તુ આપી છે, તો આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ અને ભગવાનના આશીર્વાદ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહીએ કે એ બધી વસ્તુના એ ગુણનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણો સક્સેસ મેળવી શકશું. ડ્રીમર્સ ક્રિએટ અ વર્લ્ડ ઓફ ધેર ઓન. આ ટોપિકથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કવર કરશું.